Hello viewers, today I am going to discuss covalent bond, coordinate bond, Lewis electron dot formula and valence bond theory. So you have I have early discussed ionic bond, which is formed by transfer of electron between two atoms. The atom losing electron should have low ionization enthalpy, that is metal atom, and the atom accepting electron should have a high electron gain enthalpy, that is non-metal atom. So when a chemical bond is formed between two non-metallic atoms, transfer of electron between them is not possible. So, chemical bond formed between them by sharing of unpaired electrons between the two atoms, which is called covalent bond. The chemical bond which is formed by sharing of unpaired electrons between two atoms. The shared pair of electrons are attracted by both bond forming atoms and is responsible for formation of covalent bond. It is formed between two non-metallic atoms. There may be 1, 2 or 3 covalent bonds between two atoms. When a covalent bond is formed between two atoms of equal electronegativity or atoms of same element, nucleus of both atoms attracted the shared pair of electrons with equal force. So the shared pair of electrons remains symmetrical between two nuclei, resulting no charge on the bond forming atom, and it is called a non-polar covalent. Like a covalent bond is formed between two AA atoms. Nucleus of both atoms attract the shared pair of electrons with equal force. So the shared pair of electrons remains symmetrical between two nuclei, resulting no charge on the either of the two atoms. So it is called non-polar covalent bond. Examples are given: bond between two hydrogen atoms, bond between two chlorine atoms, and bond between two nitrogen atoms. 3 bonds shared by 3 unpaired electrons. When a covalent bond is formed between two different atoms, like A and B, where B is more electronegative atom and A is less electronegative atom, then the shared pair of electrons becomes polarized toward the more electronegative atom B, resulting partial negative charge on B and partial positive charge on A. This type of bond is called polar covalent bond. For example, bond between H and Cl, H and O, carbon and oxygen, nitrogen and hydrogen. The covalent bond is formed by sharing of electrons, unpaired electrons, in an orbital, and the orbital has definite orientation. So covalent bond has directional character and the covalent molecule has definite geometrical shape. Properties of covalent compound: it exists as molecule consisting only covalent bonds. वैसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड हो उसे हम कोवैलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूल कहेंगे. अगर कोवैलेंट बॉन्ड के साथ आयनिक बॉन्ड भी हो, लाइक पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये आयनिक कंपाउंड कहलाएगा. It is formed by combination of non-metallic atoms having electronegativity difference less than 1.8. I have already discussed.
the force of attraction existing between covalent bond is called van der Waals force, and it may be of two types. First, induced dipole and induced dipole. These two molecules are non-polar, where center of gravity of positive charge and negative charge at the same point. These are non-polar molecules. For a certain instance, a polarity develops in this molecule due to the movement of electrons. It becomes induced dipole, and as a result of this, it also induces dipole in the neighboring molecule, and such a force of attraction is called interaction is called induced dipole. Interaction, it occurs between two non-polar molecules, dipole and induced dipole. Actually, सेकेंड स्टेज का आप ले सकते हैं. एक मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. The polar molecule induces dipole in the non-polar molecule, and electrostatic force generates. It is called in dipole and induced dipole. It exists between a polar and non-polar molecule. And dipole interaction between two polar molecules. Electrostatic force between positive pole and negative pole. The van der Waals force of a weak force and increases with increasing polarity in molecules, molecular mass and size of the molecule. Decreasing priority है, सबसे इफेक्टिव है polarity in molecule. अगर polarity है तो van der Waals force stronger हो. उसके बाद molecule of greater molecular mass में dipole van der Waals force stronger होगा. और अगर आइसोटोपिक molecule है जहाँ जिसका साइज ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, van der Waals force stronger. Due to weak intermolecular force of attraction, covalent compound exists as gas, volatile liquid or soft solid with low melting point and boiling point. Covalent compounds are soluble in non-polar organic solvent and insoluble in polar solvent like water. It is non-conductor of electricity and called non-electrolyte, क्योंकि ion form नहीं हो रहे हैं. It takes part in chemical reaction at low rate. Covalent oxides and hydroxides of non-metals are acidic in nature. Due to directional nature of covalent bond, the covalent molecule has different geometrical shape. Now, coordinate bond. It is a special case of covalent bond. Higher studies में इसको भी हम लोग covalent bond ही कहते हैं. Similar to a covalent bond, the coordinate bond is formed by sharing of a pair of electrons. But in this case, the shared pair of electrons are provided by either of the two bond forming atoms, which is called donor atom, and the second atom which takes part in sharing without providing any electron, which is called acceptor atom. अब दोनों एटम के फंक्शन में डिफरेंस है. डोनर एटम इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, एक्सेप्टर एटम इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे रहा है, बिना इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है. So the donor atom has complete octet with at least octet or duplet with at least one lone pair of electron. एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. And the acceptor atom has deficiency of two electrons in its octet and duplet. The coordinate bond is denoted by an arrow pointing from donor to acceptor atom. As a result of formation of coordinate bond, plus one charge originates from donor atom and minus one on acceptor atom. आप देख रहे हैं NH3 and BF3 के बीच नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो नाइट्रोजन एटम ऑफ NH3 कैन बिहेव लाइक डोनर एटम, एंड BF3 का बोरन एटम, इसके ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. तो बोरन एटम ऑफ BF3 कैन बिहेव लाइक एक्सेप्टर एटम. So a coordinate bond is formed between nitrogen and boron atom, forming this molecule. Similarly, again NH3 combines with H plus. So nitrogen atom NH3 donor and H plus ion. There is only no electrons, so the deficiencies of 2 electrons in duplet.
form a covalent bond. एक चीज और जान लो, if any ion participate in formation of coordinate bond, it is converted to covalent bond and charge of the ion transferred to other atom. Again, OH minus and H plus. ऑक्सीजन डोनर एटम, H plus एक्सेप्टर एटम, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है जो पूरी तरह कोवेलेंट बॉन्ड हो गया. If any participate in formation of coordinate becomes polar covalent, pure covalent. अमोनियम साल्ट NH4 प्लस का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, NH4 प्लस एंड X माइनस. NH4 प्लस में कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट दोनों है और NH4 प्लस और X माइनस के बीच आयनिक बॉन्ड है. इट कंसिस्ट ऑल थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. Now Lewis dot formula and formal charge, जो मॉलिक्यूल को आप स्ट्रक्चर दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट, इसे करने के लिए ध्यान दें. फर्स्ट, स्केलेटन ऑफ मॉलिक्यूल और अरेंजमेंट ऑफ एटम पहले डिसाइड कर लेते हैं. लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन विल बी सेंट्रल एटम. हाइड्रोजन इसलिए नहीं हो सकता किसी वैलेंसी वन है. And for polycentric molecule, most symmetrical arrangement of atoms is used. Number of shared pair of electrons in molecule or number of covalent bonds या coordinate bonds equal to number of electrons required for octet and duplet of all atoms minus total valence electron, मतलब sum of valence electron of all atoms by 2. इसका number of bond निकल आया. Place shared pair of electrons into a skeleton of molecule causing using double bond, triple bond if necessary, depending on valency of atom. Then complete all octet and duplet of all atoms putting lone pair of electrons. Now a very formal charge. Formal charge on any atom is equal to number of valence electron of an atom minus number of bonds formed by the atom, number of bonds plus number of lone pair of electrons in atom. For most likely a structure, formal charge on atom should be 0. अगर formal charge 0 है तो ज्यादा अच्छा है. A coordinate bond is given in place of covalent bond between atoms bearing formal charge +1 and -1. तो +1 वाला डोनर होगा, -1 वाला एक्सेप्टर होगा. And last, if donor atom of coordinate bond has vacant d orbital in outermost orbit, like atoms of third period, the single bond is replaced by coordinate bond is replaced by double bond using lone pair of electrons of acceptor atom. कुछ एग्जाम्पल से देखिए. CO2 तीन एटम है, तीनों ऑक्टेट फॉर्मिंग है, तो इलेक्ट्रॉन्स पर ऑक्टेट 3 into 8. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, कार्बन का 4 और ऑक्सीजन का 6. तो नंबर ऑफ बॉन्ड 4 आया. कार्बन को सेंट्रल एटम रखते हुए 2 बॉन्ड इधर दिया, 2 बॉन्ड इधर दिया, ऐसे नंबर ऑफ बॉन्ड 4 आया. तो 2 बॉन्ड इधर दिया, 2 बॉन्ड इधर दिया, 4 हो गया. अब सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, पुटिंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. CO2 CO में देख रहे हैं आप बॉन्ड 3 आ रहा है, यहां फॉर्मल चार्ज 0 है सर. CO 3 बॉन्ड दे दिया, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लॉन पेयर दे रहे हैं. तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड प्लस लॉन पेयर 4 minus 5 -1 हो गया. और ऑक्सीजन का 6 minus 5 +1 हुआ. तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज गिवन बिटवीन एटम बियरिंग +1 and -1 फॉर्मल चार्ज. ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया. नेक्स्ट HNO3 आप देख रहे हो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्टेट फॉर्मिंग है और हाइड्रोजन डुप्लेट फॉर्मिंग है. तो 4 ऑक्टेट और 1 डुप्लेट के लिए 2 + 4 into 8. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 3. तो टोटल बॉन्ड आ गया 5.
नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम रखते हैं, इस तरह 4 बॉन्ड दे दिए हैं, एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड हमको देना है, यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया। अब सबका ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट पूरा है, यहाँ दे दिया। तो फॉर्मल चार्ज यहाँ +1 आ रहा है और यहाँ -1 आ रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। CO3 2-, चारों एटम ऑक्टेट, तो 4 × 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 6 और एक्स्ट्रा +2 इलेक्ट्रॉन फॉर -2 चार्ज। तो 4 बॉन्ड आ रहा है कार्बोनेट के लिए, कार्बन को सेंट्रल एटम रखते हैं, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया। तब सबका ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो यहाँ फॉर्मल चार्ज नहीं है, यहाँ है फॉर्मल चार्ज, माइनस दोनों पर -1। अगला O3 दिख रहा है, 3 बॉन्ड है, एक दिया, ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, यहाँ फॉर्मल चार्ज +1 हो गया, यहाँ -1 है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो O3 के बारे में एक यूनिक चीज है, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, फिर भी पोलर है। नाउ SO2 3 बॉन्ड आ रहा है, ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, तो फॉर्मल चार्ज +1 हो गया और -1 हो गया, तो यहाँ एक लोन पेयर देंगे। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, लेकिन आपको बताया था कि अगर सेंट्रल एटम के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय डबल बॉन्ड यूजिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्सेप्टर एटम। तो SO2 का चार्ज हो गया ये। अब इसमें देख रहे हैं कि फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम का बनेंगे 0 है, तो आपको बताया था कि फॉर्मल चार्ज अगर 0 है तो वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है। SO3 अगेन बॉन्ड 4 आ रहा है, ये दे दिया। लेकिन फॉर्मल चार्ज यहाँ +2 है, यहाँ -1 है, -1 है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, लेकिन अगेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय डबल बॉन्ड, फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। उसी तरह H2SO4 में देख रहे हैं, बॉन्ड 6 हो गया, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस किया जा रहा है डबल बॉन्ड से। नाउ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो ये ग्राफ आप समझें, यहां ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर 2 एटम्स हैं, अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिक्रीज। तो ये दोनों एटम के बीच अगर देखें तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा न्यूक्लियस ऑफ ए attracts electron cloud of B and nucleus of B attracts electron cloud of A। रिपल्सिव फोर्स दोनों का न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेगा, दोनों का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब ग्राफ 1 में देख रहे हैं जैसे जैसे एटम क्लोज आ रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ मिनिमम हो गया, फिर उसके आगे एग्जैक्टली मतलब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज, मतलब एट्रैक्टिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन रिपल्सिव फोर्स, एंड क्लोज आने से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है।
और इस मिनिमम पर बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो चुका है, इसलिए ये जो डिस्टेंस होगा इंटरम्यूजिकल बॉन्ड लेंथ, इसके आगे एटम को क्लोज अगर आप करते हैं तो एनर्जी एकाएक इंक्रीज करेगी ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन टू न्यूक्लियस। और सेकंड ग्राफ में देखते हैं कि कंटिन्यूअसली क्लोजर आने से एनर्जी इंक्रीज कर रही है, मतलब रिपल्सिव फोर्स स्ट्रॉन्गर देन अट्रैक्टिव फोर्स। तो फर्स्ट केस कब तभी पॉसिबल हो सकता है व्हेन द टू एटम्स हैज दिस कंप्लेयर कंबाइनिंग एटम्स हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन अगर होता है तो बॉन्ड बनेगा, और इस केस में attractive force becomes greater than repulsive। और ग्राफ 2 में अगर एटम के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओनली पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इन दैट केस attractive force always weaker than repulsive force, so no there is no possibility of bond, इसलिए एटम से क्लोज आने से एनर्जी इंक्रीज करेगी। Now important postulate of valence bond theory, atomic orbitals of two bond forming atoms consisting unpaired electron of opposite spin, पहला criteria, having comparable energy and suitable symmetry overlap to form covalent bond। ऑर्बिटल ओवरलैप से बॉन्ड बन रहा तो greater extent of overlap between the orbitals gets a stronger covalent bond। Number of covalent bond between a bond existing between two atoms is equal to number of orbitals of the atom taking part in overlap। It means that अगर एक बॉन्ड बना है तो एक ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा, दो बॉन्ड बना है तो दो ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा, तीन बॉन्ड बना है तो तीन का ओवरलैप होगा। The orbital of outermost orbit of atom consisting pair of electrons, pair of electron by orbital overlap नहीं, लेकिन ये can take part in bond formation only when its one electron is excited to any vacant orbital। जैसे कार्बन 2s2 2p2 है, यहाँ दो ही ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नाउ कार्बन कैन फॉर ओनली टू बॉन्ड बट इन एक्साइटेड स्टेट one electron of 2s orbital excited to 2p, and now carbon has four unpaired electrons and can form four covalent bonds forming CH4। The orbital overlap between two bond forming atoms may occur in two ways, resulting two types of covalent bonds। First, sigma bond, it is formed by axial or head-on overlap of atomic orbitals forming the bond forming atom। जिसे देखना है SS overlap है, ओवरलैप अलॉन्ग एक्सिस हो रहा है, SP ओवरलैप हो रहा है फॉर HCl एंड PZ ओवरलैप हो रहा है। इस तरह के ओवरलैप में द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्ड फॉर्मिंग एटम्स एक्सपीरियंसिंग ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, so sigma bond is a strong bond। The extent of axial overlap or the strength of sigma bond due to P करेक्टर आएगा तो ओवरलैप ज्यादा होगा और बॉन्ड में SS लेस देन SP देन PZ। First bond between two atoms is sigma bond, so it determines the geometry of molecule। यही डायरेक्शन डिसाइड करेगा। The atoms held together by sigma bond can rotate around the bond axis freely। Atoms of all size can form sigma bond। Now pi bond, it is formed by side-wise or lateral overlap of orbitals of bond forming atoms। ये दो p pi overlap है, एक C और एक D होता है, दिस इज कॉल्ड D pi ओवरलैप एंड दिस इज D pi ओवरलैप, मतलब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल ऐसे कर रहा है। नीचे हम ब्लॉकेज से दिखाए, नीचे वाला ऑर्बिटल इसके ऊपर है दूसरा D ऑर्बिटल। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड आर फाउंड इन लोअर एंड अपर रीजन ऑफ प्लेन ऑफ two nuclei expressing weak nuclear force of attraction, so pi bond is weaker than sigma bond। The second and third bond between two atoms are pi bond, so pi bond has no effect on geometry of molecule, क्योंकि geometry तो first bond ही decide करेगा। Formation of pi bond results bond restrict rotation of atoms around the bond axis। एक की जगह दो बॉन्ड बन जाएंगे तो फिर रोटेशन नहीं होगा। Now very important point, for lateral overlap, ऐसे ऑर्बिटल कट रहे हैं तो ऑर्बिटल should have comparable size। Comparable size and internuclear distance is small।
ऑर्बिटल का साइज कंपेरेबल होना चाहिए और इंटरन्यूक्लियर स्मॉल होना चाहिए. Hence, p pi bond is most effective between two atoms of second period. जहाँ दोनों ही 2p ऑर्बिटल लेके आएंगे और साइज छोटा है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस and sometimes atom of second period and third period like S double bond. And p pi bond is effective between second period and third period. सेकेंड पीरियड वाला एटम p ऑर्बिटल लेके आएगा, थर्ड पीरियड वाला d ऑर्बिटल लेके आएगा. एक एग्जांपल है नाइट्रोजन 2s2 2p3. इस तरह एक ये एक्सियल ओवरलैप हुआ सिग्मा बॉन्ड के लिए pz और ये दोनों p pi ओवरलैप हुआ. एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बन रहा है. Limitation of valence bond theory. It could not explain geometry and shape of molecule. It could not explain paramagnetic character of O2 molecule, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से O2 का स्ट्रक्चर ये दिया जाता है डबल बॉन्ड वाला, तो इसमें कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता है, इसलिए डायमैग्नेटिक, बट एक्चुअली O2 इज पैरामैग्नेटिक. It could not explain coordinate bond. Thank you. This is very important topic. Subscribe the channel and press the bell icon and also share with your friends. Thank you.